Good evening, everyone. Welcome to WICCI Wellness and Wellbeing Council, Gujarat. मैं हूं प्रेरणा वासवानी, founder of Prerna Spreading Inspiration, and I'm the state president of this council. So WICCI जो है एक ऐसा ग्लोबल प्लेटफॉर्म है जिसमें हम लोग जो है डिफरेंट काउंसिल्स के साथ कोलैबोरेशंस करते हैं एंड अवेयरनेस सेशंस करते हैं एंड वी ग्रो टुगेदर. सो आज जो है हमारे साथ एक ऐसी एक्सपर्ट है मिस मारिया मैम. शी इज द फाउंडर ऑफ इन्फिनाइट माइंडसेट कंसल्टिंग, मिड कैरियर कोच. She is the state president of WICCI Karnataka Banking and Credit Council. She is certified NLP master practitioner, around 13 years of experience in national and international banking, and she conducts one-to-one coaching sessions and mentoring sessions with career professionals. तो आज हम जो है उनके साथ जुड़ते हैं एंड उसके बारे में जानते हैं. एंड आज का हमारा टॉपिक है embrace your inner strength through emotional awareness. So let's join her. Very good evening, ma'am. Sorry, ma'am, you are not audible. Good evening, everyone. Hi, Prerna. Thank you so much for having me here. It's a pleasure to be able to spread this joy of, emotional awareness throughout. Thank you so much. Same here. Pleasure is mine, ma'am. So first of all, आप please introduce कीजिए अपने बारे में to the audience. Yeah. So I'll start I started my journey. मैंने अपना journey जो है वो start किया 2008 में. Okay. I did an MBA. जैसे सब लोगों का सपना होता है, do an MBA and Yes. get a job. So all the tick mark activities I had done. I qualified some competitive exams, MBA किया, and then I got a very good placement with a very good bank in a very lucrative role. तो एक बार मैंने वहाँ join किया. Then I had I worked there for some time, and then like जैसे सबकी कहानी होती है, you work for some time and then parents want कि आप settle हो जाओ. So I Yes. called back my parents ने वापस बुलाया और बोला कि नहीं, I think you get married first and then उसके बाद जो करना है करो. Right. So I got married in 2010. I had to leave 2 jobs. Like I was at a very higher grade in my job. I had to leave that Oh, job. I got married. I moved to a different city. I looked for new opportunities. तो वहाँ पे मुझे जब opportunities मिली तो like there were many setbacks. Like एक नई city में जाके आप जानते नहीं हो किसी को, you don't know yes. anyone, and आप सबसे Right. मिलते हो, contacts बनाते हो. So I also did all those things. I met some wonderful people और contacts बनाए और अपने comfort zone से बहुत ज़्यादा बाहर आई. So moving to a new city, to a new organization, or like I worked for some years, and then I moved to Canada for some years. Since my husband Okay. got transferred there, so I was working there. Although like before moving to Canada, like I was again at a very good post, and I was about to get my next promotion जब मुझे Canada move करना पड़ा. So Oh. वहाँ पे रहने के बाद like my family, और वहाँ पे भी like it was a new life. अपने comfort zone से बिल्कुल बाहर आने के बहुत सारे chances मिले, जो कि हमारे लिए like बहुत लोगों के लिए बहुत hard होता है, but मेरे लिए भी था, मुश्किल था कि ठीक है अपने comfort zone से बाहर कैसे आऊँ. but ऐसी बहुत सारी opportunities मिली जहाँ पे मुझे अपने comfort zone से बाहर आना पड़ा. और उसके बाद चलता गया. Like I had left my job, and then I had family. I was with family, with kids and all. So we moved back to India around 8 years back. और यहाँ पे like I had to start everything, from scratch. I had to get back Yes. to my previous connections. I had to make new connections. I had to again come out of my comfort zone. और जब मैंने वैसा किया, मुझे बहुत सारी ऐसी नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज मिली, लाइक वुमेन नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज. जैसे विकी हमारा एक इनिशिएटिव है जिसमें हम बहुत Yes. सारे लाइक
women like who are like us, who are looking for opportunities, but हमें पता नहीं है कि Yes. कहाँ पे वो opportunities मिलनी चाहिए. So I also joined many networking communities like TEDx Women. There are many other communities like that. और जब मैंने वो join किया तो मुझे लगा कि मैं अकेले नहीं हूँ. मेरे जैसे और बहुत यू नो फीमेल्स हैं, बहुत और लेडीज हैं जो बिल्कुल Yes. उसी पाथ से गुजर रहे हैं या फिर गुजर चुके हैं या फिर गुजरने वाले हैं जहाँ से मैं जा Right. रही हूँ. और जब वो हुआ तो मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट, आई फेल्ट वेरी सपोर्टेड बिकॉज आई मेट पीपल हु आर वॉकिंग ऑन द सेम पाथ एज मी एंड दैट गेव मी अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ. uh, and then I looked for an opportunity in corporate. So I got a very good opportunity. I worked there, and gradually I realized कि ठीक है, what do I want to do, who do I want to be. तो जब मैंने वो क्वेश्चन अपने आप से पूछा, so I was someone who wanted more flexibility and who wanted to work on her own terms. So I founded my own company 3 years back. It's called as Okay. Infinite Mindset Consulting, and मैं अभी corporates को कोच करती हूँ, ट्रेन करती हूँ. आई ट्रेन वुमेन प्रोफेशनल्स, आई ट्रेन करियर प्रोफेशनल्स जिनको भी अपने जॉब में लगता है कि नहीं, वी वांट टू बी ग्रूम टू द गेट रेडी टू द नेक्स्ट लेवल. So I groom all those professionals, and it's a very satisfying journey. It's been a very satisfying journey with lot of learning, Prema. Yes, 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 correct. सो इट्स रियली ग्रेट टू नो अबाउट यू कि आप इतना कुछ कर रहे हैं एंड डेफिनेटली एक कहीं ना कहीं जो है एक गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है. कहीं ना कहीं एक ऐसा लगता है कि कैरियर इज बिकमिंग स्टेगनेंट अगर ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाता है. लाइक आई कैन से कि जैसे मेरा 17 years ऑफ एक्सपीरियंस हो गया कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, तो कहीं ना कहीं अभी लगता है कि आई शुड डू सम बिगर चेंज. कुछ ना कुछ जो है आइदर आई शुड स्विच ओवर टू प्रोफेशनल और आई शुड स्विच ओवर टू कुछ बिजनेस करूं या फिर कुछ और कुछ बड़ा एक कदम उठाएं, कुछ कंफर्ट जोन से बाहर आए. तो रियली यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब. तो जैसे जो है आज कैन से कि इस वुमेन्स डे स्पेशल, एक्चुअली वुमेन्स डे जो है ऑलरेडी हो चुका है, बट डेली एक जो है वुमेन्स डे होता ही है क्योंकि बिकॉज विदाउट वुमेन जो है कोई दिन नहीं गुजर सकता है. तो आज का जैसे हमारा टॉपिक है, तो व्हाट इज इमोशनल अवेयरनेस एक्चुअली? See, emotional awareness, like I can also tell you a definition, but मैं कुछ ऐसा आपको बोलना चाहती हूँ जो आप सब रिलेट कर पाए. सो इमोशनल यस. अवेयरनेस बेसिकली आप कैसा फील करते हो और आप वैसा क्यों फील करते हो. सो इफ यू नो दैट, इट मीन्स दैट यू आर इमोशनली अवेयर. लाइक हमारे थॉट पैटर्न्स क्या हैं, लाइक अभी मेरे माइंड में हाउ एम आई फीलिंग राइट नाउ एंड व्हाई एम आई फीलिंग लाइक दैट. सो इफ यू have a clarity on that, most of the times means you are more emotionally aware. So that is, in very very simple definitions, emotional awareness. आप कब कैसा फील कर रहे हो और क्यों फील कर रहे हो, क्या आपको पता है कि आप ऐसा फील कर रहे हो और क्यों ऐसा फील कर रहे हो. इफ यू नो दैट, दैट मीन्स यू आर इमोशनली अवेयर. यस, करेक्ट. सो हमें जब खुद से अवेयरनेस आएगी तभी हमें पता चलेगा कि हाउ वी आर फीलिंग, व्हाट वी आर डूइंग और हम क्यों ऐसा फील कर रहे हैं. एंड हाउ वुड यू डिफाइन इनर स्ट्रेंथ एंड व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट फॉर द इमोशनल वेलबींग? See, inner strength is, to so inner strength, if I talk about inner strength, the roots of inner strength are, in emotional awareness. So if we know ki, okay, what is going on inside our mind and why are we behaving like how we are behaving, what are our thought patterns, हमारे generally thought patterns कैसे होते हैं. So if we know that, and we are always so ऐसा नहीं है कि I am feeling something and I am behaving in a different way. So how I am feeling and how my behavior is, अगर उसमें एक alignment होता है तो it means we are emotionally aware. और जब हम बिल्कुल उसी तरीके से when we are able to behave in a way that which is really aligned to us, it gives a lot of strength to us. So मुझे ऐसा लगता है कि आप जैसे हो, like you don't have to be someone else for someone else. That gives a lot यस. of strength to us. राइट, राइट. टोटली एग्री बिकॉज हम जो है ज्यादातर जो है वही पोर्ट्रे करते हैं कि
जो जैसा हमें बोलते हैं हम उसके हिसाब से चलने की कोशिश करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो है वो एक फ्लक्चुएशन आ जाता है। सो मैं ये जानना चाहूँ कि अभी जो है बहुत सारे मिसकंसेप्शंस भी होते हैं अबाउट द इमोशंस, तो वो कैसे हमारे इनर स्ट्रेंथ को हेल्प कर सकता है कि जैसे, क्योंकि बहुत सारे मिथ्स भी होते हैं रिलेटेड रिलेटेड टू द मेंटल हेल्थ या फिर इमोशंस, तो व्हाट आर योर व्यूज अबाउट इट? That's a very very good question and that's a very relatable question, रेना। बहुत बार मेरे से लोगों ने ये क्वेश्चन पूछा है कि क्या मिथ्स हैं और क्या वो सच हैं कि नहीं है। सो एक बहुत बड़ा मिथ है कि वी शुड ओनली शो पॉजिटिव इमोशंस, वी शुड ऑलवेज बी यस, पॉजिटिव एवरी टाइम। एक बहुत बड़ा राइट, मिथ है। एंड लाइक वी शुड नॉट करेक्ट, शो नेगेटिव इमोशंस, नेगेटिव इमोशंस आर नॉट गुड। सो ऐसा बिल्कुल है यस, नहीं। ऐसा है कि लाइक पॉजिटिव इमोशंस भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, एंड वी शुड फील ऑल दोज इमोशंस। इफ इट इज अ पॉजिटिव इमोशन उसको पूरा हमें फील करना चाहिए, नेगेटिव है उसको भी फील करना चाहिए। मगर ये चीज़ है कि लाइक हाउ वी एक्सप्रेस दैट, इवन इफ वी आर फेसिंग अ नेगेटिव इमोशन, वी फेसिंग स्ट्रेस, वी फेसिंग एनी काइंड ऑफ नेगेटिव इमोशन, एंगर, सो हाउ वी एक्सप्रेस दैट, अगर हम उसको मैनेज करें तो that is the best way to go. So ऐसा नहीं हो सकता कि हम खाली पॉजिटिव हमेशा रहें और खाली पॉजिटिव इमोशंस एक्सप्रेस करें, बिकॉज वी आर ऑल बाय नेचर ह्यूमन बीइंग्स एंड वी कांट जस्ट बी पॉजिटिव ऑल द टाइम बिकॉज वी आर नॉट मशीन्स, वी आर सोशल बीइंग्स। तो नेगेटिव इमोशंस आते हैं, उनके साथ डील कैसे करते हैं हम, आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो इट इज नॉट just positive emotions all the time, and you should not यस, be afraid of, or you should not be taking a back seat while you are, you know, going through your negative emotions. उनको मैनेज कैसे करना है, if we learn that, I think we become a superpower. And यस, emotion is टोटल, basically energy in motion, emotion if you see. So it's just a form of energy. उस energy को आप manage कैसे करते हो, I think that is very very important. यस, यस, टोटली एग्री, बिकॉज काफी लोग जो है ऐसे ही बिलीव करते हैं कि हमेशा पॉजिटिव रहो, हमेशा, अगर कोई स्ट्रांग पर्सन होता है और कभी वो रोने लगता है तो क्यों रो रही है, तू तो बहुत स्ट्रांग है, तू ऐसे कैसे रो सकती है, तो इट कहीं ना कहीं वो क्या है, सप्रेशन आ जाता है फिर इमोशंस के अंदर, तो वो फिर बाद में जो है वो फ्रस्ट्रेशन में वो जो है डाइवर्ट हो जाता है। So that's very तो true, प्रेरणा। इनफैक्ट हम लाइक अपने बच्चों को भी जब बोलते हैं, इफ दे आर क्राइंग वी टेल देम कि अच्छा डोंट क्राई, मेनी पेरेंट्स से दैट। यस, यस, So I think just let them know how to handle the emotions, let them not say no to expressing negative emotions. So कोई भी energy, like if you don't express it, it becomes trapped, हमारे अंदर trap हो जाती है, and that should not happen. Yeah. यस, यस, टोटली एग्री। सो सेल्फ कंपैशन ये कैसे रोल प्ले करता है हमारे इनर स्ट्रेंथ और इमोशनल वेलबींग के लिए, अगर जब भी जैसे चैलेंजिंग इमोशंस आते हैं, तो हाउ इट हेल्प्स? So like Prerna, this is a very important question what you asked कि self compassion हमारे लिए कैसे important है. So if you ask someone like who's going through some, kind of turmoil, so if you ask people to just journal, अगर आप लोगों को journal करने को बोलोगे, so there will be a thought pattern। आप जो अपनी journals की book है उसमें there will be a thought pattern कि like हमारे most of our thoughts in our mind are repetitive। हमारे mind में जो भी यस, thoughts आते हैं, a major chunk is repetitive, right? So like how we talk to ourselves, हम अपने आप से कैसे बात करते हैं। So for example somebody made a mistake, I made a mistake for example, so what do I do next, how do I talk to talk about that mistake to myself? There's one way of saying, okay, oh you did this mistake, you should not have done this, that's very bad। Or you tell यस, yourself, acha you made this mistake, no worries, this is how you can rectify and this is what you have learned from the mistake। So अपने लिए आप like how do you talk about yourself to yourself? Most of the time, like if you see, we keep talking to ourselves, हम अपने साथ सबसे ज़्यादा time spend करते हैं, many people। हम like there's something called as self talk, अपने साथ हम यस, कैसे बात करते हैं, right? So how we talk to ourselves, that defines
whether we are self compassionate or not. So I think that is very very important. So first of all, self compassion कैसे होना चाहिए? So just don't be very harsh on yourself. Don't keep punishing yourselves. Don't say कि okay, I have to be a perfect like mother or a perfect wife. Don't go into Yes. that perfection. So अगर हम perfection की बात करें, like if there is a heart surgeon, अगर वो कोई चीज perfectly नहीं कर रहे हैं, see they have to be perfect because what they are doing is like अगर perfection नहीं होगा, it can cost the patient's life. For example, if your pilot is not perfect, so it can cost so many lives. Yes. बट इन डे टू डे लाइफ हम जो काम करते हैं, सो इट्स ओके टू बी 80% or 90% perfect. You don't have to, like, nobody is going to give you an award if you are 100% perfect, and you would not Correct. even know whether you are 100% perfect or not. So Yes. just be okay. Don't be harsh on yourself. Don't say okay, I have done this, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है. Just do the best you can. That's what I have also learned in my journey. Yes. Yes. Totally agree. सो थैंक यू सो मच, आपने ये इतना सारा नॉलेज दिया। तो व्हाट आर द प्रैक्टिकल, कुछ आप टिप्स देना चाहेंगे या फिर ऐसी कोई स्ट्रेटजीज या एक्सरसाइजेस विच विल हेल्प इंडिविजुअल्स कुछ इमोशनल अवेयरनेस या फिर अपनी इनर स्ट्रेंथ में वो हेल्प कर सके? जी, जी, बिल्कुल। कुछ बहुत अच्छी चीज़ें हैं जो मैं शेयर करना चाहूँगी, जो बहुत सारे लोगों के लिए वर्क करी हैं और शायद हमारे व्यूअर्स के लिए भी वर्क करें, क्योंकि बहुत लोगों ने बेनिफिट लिया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, लाइक, आप कैसा फ़ील करते हो? अंडरस्टैंड योरसेल्फ। सो कभी आपको, लाइक, इफ यू फीलिंग स्ट्रेसफुल और यू हैविंग एनी नेगेटिव इमोशन, तो व्हाट इज़ दैट इमोशन? जस्ट लेबल दैट, राइट इट डाउन ऑन अ पीस ऑफ पेपर कि आप कैसा फ़ील कर रहे हो और क्यों फ़ील कर रहे हो। बिकॉज वंस यू नो वॉट इट इज, यू कैन ऑल्सो मैनेज इट। ये बहुत ही यस। बेसिक हम चीज कर सकते हैं। एंड द सेकेंड थिंग इज, लाइक, द मोर वी जर्नल इज the more better it is. The more we journal, the more we understand ourselves, the more we reflect. तो जर्नलिंग एक बहुत अच्छा ये एक्टिविटी है, जो इट कैन बी डन बाय एनीथिंग. इट इज नॉट एनी रॉकेट साइंस. एनीवन कैन डू. Like daily, if you journal for 20 minutes, like 10 minutes in the morning and 10 minutes in the night before sleeping, that can work wonders. आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी अपने बारे में. uh, और एक बात है, like, meditation is a very very good practice. Yoga, यस। करेक्ट। that is a very good practice that helps many people. And we should always be empathetic. So whatever you are going through, like, ठीक है, it's not that you are only going through something, other people are also going through other things. So be, thinking, going into the other person's shoes and thinking how they are thinking and why they are thinking, and why they are behaving the way they are behaving. So अगर हम उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ देखें, तो हमें कुछ भी गलत नहीं लगेगा, क्योंकि एक बेसिक न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग का एक बेसिक टेनेट है, फॉर एवरी ओके। बिहेवियर देयर इज अ पॉजिटिव इंटेंशन. जो भी बिहेवियर हमारा होता है, लाइक, सो फॉर एग्जाम्पल, इफ यू गोइंग टू ऑफिस टुमारो इन द मॉर्निंग, सो यू विल नॉट गो विद द इंटेंशन कि यार ठीक है, टुडे आई वांट टू गो लेट, आज मैं लेट जाना चाहती हूँ. यू विल नॉट गो विद दैट इंटेंशन. कभी यस। हम बच्चे को कुछ बोलते हैं, सो इंटेंशन कभी भी नहीं है कि ठीक है, आई वांट टू बी शो नेगेटिव बिहेवियर टू द पर्सन. नो, आपका इंटेंशन है कि नहीं, आई वांट टू टीच दिस पर्सन समथिंग. सो एवरी यस। बिहेवियर हैज अ पॉजिटिव इंटेंशन. सो अगर हम ये लेंस से हम सब चीज़ों को देखें, सो आई थिंक थिंग्स विल बी वेरी इजी. एंड नेवर जज पीपल बाय देयर बिहेवियर. आई थिंक इफ यू डू दैट, आपका, like, you'll save a lot of energy. So these are few यस। things टोटली like एग्री। meditation, journaling, as I said, and being aware of yourself, writing, and meditation. यस। यस। टोटली एग्री। सो जर्नलिंग में डू वी हैव टू राइट कि पॉजिटिव चीजें ही लिखनी है, या फिर हम जो फेस कर रहे हैं या फिर हम लोग फील जो कर रहे हैं या जो भी इंसिडेंट्स हमारे दिमाग में चल रहे हैं, तो डू वी हैव टू राइट दैट आल्सो, या फिर इज देयर एनी प्रोसेस ऑफ राइटिंग जर्नलिंग? So journaling में, like, morning में, so what I would recommend to write 2 to 3 pages of whatever is there in your mind, ओके। जो भी है.
So एक बार what happens, like, so for example, if there is a bottle in front of me, okay, this bottle is already filled, so I will not be able Yes. to put more water. But अगर ये bottle Right. empty है तो it will be ready to take more. So हम morning में क्या होता है, like when we wake up we talk a lot about, you know, with ourselves कि अच्छा ऐसे करना है, ये नहीं हो रहा है. So if we write all that on a piece of paper, it will get out of our mind. And then also write, okay, what are the three most important tasks I have to do today, right? So I Okay. think that Okay. is Okay. the way to have a to-do list. And when you like sleep, शाम को सोने से पहले, if you can write that one win, what is that one thing that you have you know, accomplished today, and what is that one learning that you have had today. I think that that will take a lot of, you know, that will take a lot of baggage away from our minds. That's very Yes. helpful. Yes. 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 Correct. That's totally amazing. अगर हम लोग डेली बेसिस पे इसको अपनाते हैं तो we'll definitely have much more, I can say, inner strength and emotional awareness also. How this inner strength and emotional awareness is uh, important for, I can say, personal life या फिर career growth में, relationships maintain करने में, how it is important. See, there is a very strong correlation between, you know, self awareness and growth, like emotional awareness and growth. Okay, so आपको अपने बारे में जितना पता है, like if you know yourself more, you will be very sure of what you are doing. And when you have that surety, so why will you be sure about what you're doing? Because अगर आपको अपने बारे में पता है, for example, I know that for me, honesty, authenticity and family, these are the three most important things. अगर ये मुझे अपने बारे में पता है, and for me my career is also very important, so these are the four things that are important for me. So all my decisions I will take in alignment to those. उससे आपका Yes. डिसीजन मेकिंग बहुत स्ट्रांग हो जाता है. लाइक हम लाइक मैं ऐसे कुछ इंटरवेंशंस करती हूँ. आई डू यू नो वैल्यू एलिसिटेशन का एक मेरा सेशन मैंने किया था कुछ दिन पहले with a set of women. Okay. So what we did, we helped women uncover their values. उनके क्या values हैं. एक बार उनको वो पता चल गया, and then so once you know, for example, like if you are in a ship and you have a compass in front of you, and the compass is showing you in which direction you have to go, so your life will become easy. So इसी तरह हमें जब अपने Yes. बारे में पता होता है हमारे values क्या हैं, हमारे लिए important क्या है, so when we have that knowledge, then you know everything becomes so clear. Like आप ऐसा कभी भी नहीं सोचोगे, okay, I have taken a decision, should I go ahead with it, or did I make the right decision or not. बट एक बार हमें पता है, मुझे पता है कि ओके दिस these three things are important for me, these four things are important for me, so all my direct decisions will be in that direction. So that's how it's very important, and it's like a life changing moment. I have seen, you know, I've done these sessions with many women just who are like us, and they have had amazing reflections ki, okay, why did we not do this? Because as women I feel many of my clients, like, so we have been told ki theek hai, no, you cannot, you have to behave in a certain way. That's how, you know, we Yes. have been told, and we have been born and brought up, many of us, I'm not saying all. So Yes. I think so that awareness is very important. एक बार वो awareness आता है तो you just, you know, you feel so much confident and so much sure about what you're doing. So यस यस आई कैन टोटली एग्री कि ये सब अवेयरनेस की वजह से जो है हमारा एक जो है पाथ क्लियर हो जाता है. द आई कैन से कि इट बिकम्स लाइक अ हाईवे कि विद द हेल्प ऑफ कोचिंग एंड मेंटरशिप जो है एक पाथ क्लियर हो जाता है एंड वी कैन गो इजीली. सो yes. इट्स रियली वंडरफुल, आई कैन से इंसाइटफुल टिप्स हैं सभी लोगों के लिए. मैं ये जानना चाहूंगी, एज यू आर अ कोच, तो कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस होंगे या फिर कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होंगे जो आपके हार्ट को, जो आपके दिल को टच कर रहे होंगे, किसी की लाइफ आपके मेंटरशिप से चेंज हो गई हो, तो एनी सच स्मॉल इंसिडेंट. Actually, it's not possible to share it in this session because there are so many transformations, right? But यस you know, so I'll just give one example. So one of my clients, so
So her one of her main value was like she wanted to earn a lot of money, Okay. but she had a hesitation that she, okay, I cannot ask my clients. So मुझे Yes. I hesitate while asking my clients. So एक बार उनको clarity मिली कि नहीं, okay, money is important, I should be comfortable in asking, then her behavior also got aligned in that direction, and now she is doing, like she's doing very good. So ऐसे छोटे छोटे aha moments हैं. So coaching is not, again I'll say, it's not something like that is a rocket science, and many women I have seen who hesitate to spend a lot of time on themselves. Like लगता है कि ठीक है, Yes. coaching से अच्छा है, ठीक है मैं खुद, I'm okay, I don't want any help, I'm okay not to have any help. And in that way, like they spend a lot of time in living a life that is not true to themselves. But मुझे ऐसा लगता है कि हम हमारी लाइफ में सबको ही कोच की जरूरत है. Like even I have 2 to 3 coaches for myself, but at the same time I also coach many other people. So we need that mentor and that guiding light जो हमें time to time direction दिखाए. uh, so I think that's very important. We all should invest in a coach, in a mentor. ऐसा मुझे लगता है, because it has helped me, so it might help others also. So I'm sharing this. Yes, it's definitely. So at the end, I would like to say कि अभी जैसे हमारा Women's Day special है, तो what message would you like to give to our audience? I would say just invest in yourself and don't think that you're lesser than anyone. It's just that one moment in your life that will change you. Just start investing in yourself, and you are very important. Just two three things: that don't be a perfectionist, you are very important, put yourself forward and invest in yourself, because if you invest in yourself, like the whole family goes ahead. So if only one person in the family invests in themselves, it doesn't matter, but when a woman invests in herself, the whole family changes. That's what I feel, and that's my message Great. to everyone. Yes, great message, Maria ma'am, and it's really wonderful session with you. And बहुत सारी चीजें आपने बताई, सिखाई. सो एट द एंड अगर लोग आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, आपकी सर्विसेज लेना चाहते हैं, तो प्लीज टेल इन शॉर्ट कि आप कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं एंड हाउ दे कैन कनेक्ट विथ यू. Sure, sure, Prerna. Thank you so much. So I coach women professionals. I coach career professionals. I also do like sessions for corporates. अगर कोई corporates में आपको sessions करने हैं, webinars करने हैं, I also do that. And I do, like I can customize. I do customized trainings for corporates. And if someone wants to ओके. reach out to me, they just have to contact me on LinkedIn. I will also put my number in the private chat, in the chat box. They can reach out to me whenever they are fine. Thank you so Great, much, Rena. great. Thank you so much, Maria ma'am, for your wonderful time and precious time and giving lots of insights for this. And I'm sure कि सभी लोगों को बहुत ही benefit हुआ होगा and they will get more inner strength and emotional awareness from this. And we'll definitely do more sessions with you. And it's wonderful collaborating with you. Thank you so much for Thank you, today's Prerna. time. Yeah, have Thank a you, Prerna. great day. I really appreciate your initiative, and yeah, I really wish all the best to all our viewers, and to you also. Thank you so much. Thank you so much. Have a great time. Yeah. So friends, I hope आपको आज का सेशन काफी अच्छा लगा होगा. And please do connect if you want to have some mentorship. And you can connect me if you want to connect Maria ma'am. And you can directly connect Maria ma'am for this. And have a great time. And see you again with another expert next Sunday. And thank you. Take care and bye bye.